Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। Sorry गुड about आफ्टरनून मैम। in the morning कुछ तो नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था. So I had to reschedule the class. So your final exams are also declared, right? यस मैम। Okay. So go through the topics which has been covered already, and I have shared the links in your Google Classroom of the class videos. अगर कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो किसी किसी भी टॉपिक में तो वी कैन डिस्कस इट. और इस वीक में फ्राइडे को मिड सेमेस्टर हो जाएगा तुम लोग का, सेकेंड मिड सेमेस्टर जो पेंडिंग है. तो सभी को तुम लोग इन्फॉर्म कर देना, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी कि फ्राइडे को तुम लोग का मिड सेमेस्टर हो जाएगा. टाइमिंग में इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है. ओके, सो the important topic which has to be covered in your subject is about illumination. Illumination is nothing but it is an engineering which is मैम necessary. फर्स्ट मिड सेमेस्टर कॉपी चेक हो गया? नहीं, एक्चुअली मैं अभी तक चेक नहीं कर पाई हूँ सारा. सो थोड़ा टाइम और लगेगा मुझे. मैं चेक करके तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी, मार्क्स जो है वो बता दूंगी, ठीक है. बाय द एंड ऑफ दिस वीक यानी 15-16 तक मैं तुम लोग को बता दूंगी दोनों ही मिड सेमेस्टर्स के मार्क्स, ठीक है. So fundamental of illumination is nothing but it is about all about light, its emission of light and receiving of light. जो भी हम लोग in case of डे लाइट या नाइट लाइट या रोड लाइट्स, जो भी डिफरेंट टाइप के लाइट्स हैं और उनका कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए टाइम के हिसाब से या वॉट के हिसाब से, पावर के हिसाब से. सो that is what we are going to study in this module. According to different type of heating of the substance radiates some amount of energy. Okay, so depending upon the heating of the element, it radiates some amount of energy, and this energy is received as light to our human beings' eyes. So illumination is nothing but the energy which is radiated by the element is of different wavelengths. Different wavelength पे depending upon कि कितना energy उससे radiate हो रहा है, कितना heat हो रहा है वो element. तो कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम लोग को कोई भी चीज़ रेड हॉट दिखती है या फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं वो तुम लोग को वाइट दिखती हैं. तो this color change of the different types of light depends upon the wavelength of light which is being radiated from the element and being received by our eyes, ठीक है. So this is depending upon the nature of light and its wavelength. किस wavelength की light या energy जो है वो radiate हो रही है, depends upon that. Okay, so let us start. So study of illumination engineering is necessary not only to understand the principle of light control as applied to interior lighting design such as domestic and factory lighting, but also to understand outdoor applications such as highway lighting, flood lighting, etc. Nowadays, the electrically produced light is preferred to other source of illumination because of an account of its cleanliness, ease of control, steady light output, low cost and reliability. The best illumination is that it produces no strain on the eyes. Apart from its aesthetic and decorative aspects, good lighting has a strictly utilitarian value in reducing the fatigue of the workers, protecting their health, increasing production, etc.
The science of illumination engineering is therefore becoming major of importance, as because the lighting depends कि कितना प्रोडक्शन, सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट द फैक्ट्री, सो जहाँ पे भी सपोज बहुत ज़्यादा माइन्यूट काम हो रहा है, सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट ज्वेलरी मेकिंग और फैक्ट्रीज लाइक दैट, तो इल्यूमिनेशन जो है या लाइट जो है वो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है अंडर अंडर सच फैक्ट्रीज. If we talk about factories which are running on day night basis, नाइट में भी काम करते हैं, डे में भी काम करते हैं, so under that condition illumination is considered to be a major factor of production of the factories. So that is why we study कि illumination किसी भी indoor या outdoor का कैसा होना चाहिए. You might have studied, there are being many researches which is going on the illumination of highways, illumination of flood lightings. तो इन पे भी बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं सो दैट कि मिनिमम कॉस्ट में बेटर और इफ़ेक्टिव इल्यूमिनेशन प्रोवाइड किया जा सके फॉर द कंज्यूमर्स. Now light is a form of electromagnetic energy radiated from a body and human eye is capable of receiving it. Light is a prime factor in the human life, as all activities of human being ultimately depend upon the light. Various forms of incandescent bodies are the sources of light, and the light emitted by such bodies depend upon their temperature. So incandescent lamps हो गए, bodies हो गए, so these are the sources of light, and the amount of light which is radiated from these bodies depend upon their temperature. A hot body about 500 to 800 degrees centigrade becomes red hot, and about 2500 to 3000 degrees centigrade the body becomes white hot. So this is the temperature difference. You can see कि 500 to 800 degree centigrade में the body becomes red hot, whereas in case of white hot the body is temperature is of 25K, 2.5K to 3K. So the body becomes white hot. While the body is red hot, the wavelength of the radiated energy will be sufficiently large, whereas in case of white hot the wavelength of the body radiated is comparatively of low wavelength. The wavelength of light wave varying from 0.0004 to 0.0075 mm, that is 4000 to 75,000 Armstrong, is accepted or is visible to the natural eye. ठीक है, so this wavelength of light can be measured using a natural eye. The eye discriminates between the different wavelengths in this range by the sensation of color. बेसिकली आई को वेवलेंथ का पता नहीं होता है, बट बाय रिसीविंग दिस वेवलेंथ्स आई जो है वो डिस्टिंग्विश कर पाती है इन डिफरेंट कलर्स, एंड बाय लुकिंग एट द कलर्स यू कैन आइडेंटिफाई द वेवलेंथ ऑफ द radiation which is emitted by the body. The whole of the energy radiated out is not useful for illumination purpose. Some of the radiation is wasted in conduction, some is wasted in radiation. So a few amount of the energy which is radiated by the body is absorbed as illumination by the eye of the human being. Radiations of very short wavelength varying from this, यानी कि ये कितना है 0.4 times 0156 into 10 to the power minus 6, या फिर इसको हम इंटू 10 to the power minus 9 या पिको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइडिंग बाई 1000. सो to 0.001 into 10 to the power minus 6 meter are not in the visible range and are called as Röntgen or X-rays, which are having the property of penetrating through the opaque bodies. So these wavelengths which are of very small length of 10 to the power minus 12 minus 9
picometer or -9 meters, so that is not visible to the normal eye. So the important part of this chapter is that you have to solve some numericals based on the illumination. ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल करने के लिए हमको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इल्यूमिनेशन पता होना चाहिए, और on the basis of these terms you will be able to solve the numericals of illumination. So let us see what are the terms and terminology of illumination, किस चीज़ को क्या बोलते हैं illumination में, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल पावर कैसे कैलकुलेट होता है, ल्यूमिनस कैसे कैलकुलेट होता है. This is what you have to study in this chapter. The following terms are generally used in illumination. Color is normally, you know what is color. So color in illumination is understood in the terms of wavelength. Color in illumination is understood in the terms of wavelength. Now see, the energy radiation of the heated body is monochromatic. Monochromatic मतलब single color निकलता है. That is the radiation of one wavelength emits specific color. Radiation of one wavelength emits specific color. कभी भी तुम लोगों ने देखा होगा कि when you fire something, you see the light changing from blue to red to white. कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि if you fire something, if you fire a paper, if you fire a candle, if you fire matchstick, so you see that the color that is visible to your eyes changes from blue to red to white. So what is this happening? क्योंकि different wavelength का radiation जो है, whenever you are firing there is a increase of temperature, और increase of temperature की वजह से there is a heat energy that is radiated in different amount of wavelengths, और different wavelength का जो color is visible to your eye is different. So इसीलिए इसको बोलते हैं monochromatic. The radiation of only one wavelength emits specific color. The wavelength of visible light lies between 4000 to 7500 Armstrong. The color of the radiation corresponding to wavelength is shown in figure 6.1. So if we see figure 6.1, so see, this is the entire wavelength 4000 to 7000. Now you can see the color changing from violet to blue to green to yellow to orange to red and infrared. So this is y-axis is the sensitivity. As the sensitivity increases and the wavelength increases, the color of that is visible to your eyes is changing from one wavelength to another wavelength. ठीक है, so this also depends upon the sensitivity, कितना sensitive है तुम्हारा आँख, because what happens, as you see कि with age people जो people का color differentiation का जो ability होता है वो भी कम हो जाता है. ठीक है, या some people have some defects and some power in eyes, जिसकी वजह से उनकी eye जो होती है वो sensitive कम होती है, so it is harder to differentiate between different wavelengths of short span. मतलब कि उनको violet, blue और green में difference नहीं दिखाई देगा, blue, red में difference दिखाई देगा. So it depends upon the sensitivity of your eye as well as the wavelength which is being radiated from the body. So this was about color, which ranges from the wavelength of 4000 Armstrong to 7500 Armstrong. Second term which is important is relative sensitivity. The reacting power of the human eye to the light waves of different wavelength varies from person to person and also varies with age. The average relative sensitivity is shown in figure 6.2. So 6.2 shows the average relative sensitivity. So depending upon the wavelength and depending upon the eye sensitivity, you can the wavelength which is visible to your eye depends upon person to person and
and person with age it changes from person to person. ठीक है, तो it doesn't have to say कि अगर आज मेरी sensitivity इस wavelength के लिए ये है, suppose for 5500 wavelength my sensitivity is 0.6, it might possible that with age my sensitivity decreases to 0.4. ठीक है, सो दिस इज रिलेटिव सेंसिटिविटी, मतलब कि ये जो रिलेटिव सेंसिटिविटी है डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारे पर्सनल आई का जो डिफ्रेंशिएट करने का जो सेंसिटिविटी है वो कैसा है. नेक्स्ट टर्म इज लाइट. इट इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी that produces the virtual sensation upon the human eye. Radiant energy from a hot body that produces the virtual sensation upon the human eye. यानी कि जो भी वेवलेंथ का रेडिएशन एक hot body यानी body at certain temperature it radiates some energy that is received to your eye, and that is what you can see in form of light. It is expressed in lumen hours and it analogous to watt hours which is denoted by the symbol Q. So जैसे watt hours पढ़ते हैं हम लोग, power पढ़ते हैं हम लोग, watt hours is basically what? It is energy, right? So जैसे एनर्जी हम मेजर करते हैं इन केस ऑफ वाट आवर्स, वैसे ही हम लोग लाइट मेजर करते हैं ल्यूमेन आवर्स में. ठीक है, वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स और उस टाइम पे थोड़ा और क्लियर होगा. सो लाइट इज नथिंग बट द एनर्जी विच इज रेडिएटेड फ्रॉम अ हॉट बॉडी एट अ सर्टेन टेम्परेचर, दैट इज अ लाइट. ल्यूमिनस फ्लक्स, it is defined as the energy in the form of light waves radiated per second from a luminous body. ठीक है, so light waves radiated per second from a luminous body is known as luminous flux. जैसे नॉर्मल हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं, सिमिलरली ल्यूमिनस फ्लक्स है. एंड व्हाट इज ल्यूमिनस फ्लक्स? इट इज द अमाउंट ऑफ लाइट वेव्स विच इज emitted from a luminous body per second. It is represented by the symbol phi and measured in lumens. So lumens hour will give you the value of Q or light. Suppose, for example, suppose the luminous body is an incandescent lamp. The total electrical power input to the lamp is not converted into luminous flux. ठीक है, so suppose you are lighting a bulb in your room. So whatever power you are giving to that bulb is not converted 100% to luminous flux, is not completely radiated in form of light. Some of the power is lost through conduction because the bulb will get heated. So some of the power is lost through conduction, some is lost through convection, and some are lost through radiation. A fraction of the remaining radiant flux is in the form of light waves, lies in the between the visual range of wavelength, that is 4000 to 7500 या 75000 77,000 Armstrong. So the figure is shown here. If you see figure 6.3, so this is power input to a bulb, and this power input will be distributed into certain power loss and radiant flux. So some amount of power is used for radiant flux, which will give you which will convert the power into light for you, which will have luminous flux, and power lost as non-luminous flux, and another power is lost due to conduction, convection and radiation. Okay, so what terms we have studied? पहला हो गया हमारा कलर, हो गया रिलेटिव सेंसिटिविटी, हो गया दैट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एंड पर्सन टू पर्सन. लाइट इज नथिंग बट द एनर्जी विच इज बीइंग रेडिएटेड थ्रू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर. Luminous flux is the amount of light waves emitted per second through a luminous body.
Now, the important factor which we have to study is radiant efficiency. When an electric current is passed through a conductor, some heat is produced, which is equal to I square R loss, which increases its temperature of the conductor. At low temperature, conductor radiates energy in the form of heat waves, but at high temperature, radiated energy will be converted in the form of light waves. ठीक है, at low temperature these energy will be converted into heat waves, and at very high temperature these radiated energy will be seen as a form of light, which you can see in your domestic incandescent lights. So radiant efficiency is defined as the ratio of energy radiated in the form of light produced sensation of vision to the total energy radiated out of the luminous body. So radiant efficiency is given by energy radiated in the form of light divided by the total energy radiated by the बॉडी. यानी कि जो भी एनर्जी हम इनपुट ले रहे हैं, जो भी पावर हम इनपुट ले रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ पावर इज कन्वर्टेड टू हीट द बॉडी, and when the temperature of the body increases to a certain level, after that energy is converted into light. ठीक है, तो टोटल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू लाइट. तो रेडियंट एफिशिएंसी क्या देता है, ये वो फैक्टर देता है जिसमें हमारा जो पोर्शन इज कन्वर्टेड इनटू लाइट डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी दैट इज रेडिएटेड बाय द बॉडी. Okay, so radiant efficiency is given as energy radiated in the form of light, divided by total energy radiated by the body. Now there are two very very important am I audible? Was there a disconnection? पता नहीं चला मुझे. Okay. So there are two very important terms in case of illumination. एक है हम लोग का प्लेन एंगल और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल. ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में तुम लोगों ने कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा होगा. प्लेन एंगल इज बेसिकली नथिंग बट अ टू डायमेंशनल एंगल. ठीक है, अगर किसी भी प्लेन टू डायमेंशनल प्लेन में मैं एंगल बना रही हूँ, किसी भी टू डायमेंशनल प्लेन में मैं एंगल बना रही हूँ, इफ यू ड्रॉ एंगल बिटवीन द टाइल्स दैट इज फ्लोर्ड इन योर फ्लोर. ठीक है, जो भी टाइल्स लगे हुए हैं तुम्हारे फ्लोर में, उनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर तुम एक एंगल देखो तो दैट इज अ प्लेन एंगल. वेयर एज इफ यू सी एन एंगल बिटवीन the walls and the tiles of your room, that is a solid angle. मतलब जो भी एंगल 3D में एंगल जो दिखता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल. 2D में जो एंगल दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल. ठीक है, a plane angle is the angle subtended at a point in a plane by two converging lines. So if you see here, an example of plane angle and solid angle is drawn. So this is the plane angle. ब्रेक हो रही है. आवाज ब्रेक हो रही है क्या? एक मिनट. यस मैम.
Okay, so I was discussing about plane angle and solid angle. So a plane angle is an angle subtended at a point in a plane by two converging lines. So if we see these two converging lines which is converging at a point O, the angle made between these two converging line is given as plane angle or theta. And this angle is between this arc and this radius. So angle theta can be given as arc divided by radius. Angle theta can be given as arc divided by radius. 1 radian of plane angle is defined as the angle subtended by an arc of a circle whose length by an arc of a circle is equal to the radius of the circle. So 1 radian will be equal to 1 radian of plane angle will be equal to when the arc of the circle is equal to the radius of the circle. ठीक है. So this, when two line converging make an angle, it is known as plane angle. Whereas a solid angle is nothing but a 3D angle. ठीक है, यहाँ पर तुमको ये फिगर में सी these lines are projecting towards and converging towards a point O. All these lines are converging towards a point O. So this is nothing but a set of converging lines which is coming to a point O, making an angle omega, which is given as omega as a solid angle. Solid angle is the angle subtended at a point in space by an area. That is the angle enclosed in the volume formed by numerous lines lying on the surface and meeting at a point. So basically this is nothing but plane angle और solid angle के बीच में बस difference इतना समझो कि this is a three-dimensional angle. Solid angle is a three-dimensional angle which consists of number of lines which is converging at a same point, whereas in case of plane angle it consists of only two lines which is converging at a point. ठीक है. So it is usually denoted by a symbol omega and is measured in steradian. Solid angle omega is equal to area divided by radius square. So from this sphere, center of the sphere, omega can be given as area of sphere divided by radius square. So area of a sphere can be given as 4 pi r square divided by capital R, which is the radius of the sphere. So divided by r square can be given as 4 pi steradian as the solid angle of this sphere. Okay, so this is very important like topic, solid angle and plane angle. You might get numerical questions in this part of your chapter, जहाँ पर हम लोग को luminous निकालना पड़ सकता है, power निकालना पड़ सकता है, solid angle and plane angle निकालना पड़ सकता है. ठीक है. Now deriving a relationship between plane angle and solid angle. Now from here if you see इस डायग्राम में देखो फिगर 6.6, if you draw a perpendicular from A to C, okay, you have a triangle now, triangle OAC, right? You have taken a plane angle and जिसमें ये AC जो है वो तुम्हारा आर्क है और OB एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तुमने from O to B, and similarly A to C एक perpendicular ड्रॉ किया है. ठीक है. Now OB is nothing but radius, OA is radius and OC is radius of this arc. This theta, जैसे इसमें हम एक perpendicular ड्रॉ करेंगे, theta is divided into two equal angles which is equal to 3 theta by 2. This BOC will also be equal to theta by 2, right? Now BD will be equal to how much? BD will be equal to OB minus OD, right? BD will be equal to this HBD will be equal to OB minus OD, right? OB is nothing but the radius. See, let us consider a curved surface of a spherical segment ABC of height h and the radius of the sphere as r as shown in the figure, right?
and this ABC has a height of h here. Spherical segment of height h and the radius of r as shown in figure 6.6. The surface area of the curved surface of the spherical segment ABC will be equal to 2 pi r into h. So surface area of this curved segment ABC will be equal to 2 pi r into h, where r is the radius of the arc and h is the height of the surface area. So BD will be equal to nothing but OB minus OD, राइट. बी हमको एक्चुअली एच की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम बी डी निकाल रहे हैं. सो बी डी विल बी इक्वल टू नथिंग बट ओ बी माइनस ओ डी. ओ बी इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द आर्क एंड ओ डी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2. ओ डी विल बी इक्वल टू ओ ए cos theta by 2 or r cos theta by 2. So you can substitute here. H is equal to r minus r cos theta by 2. R को common निकाल लिया, so you will get H is equal to 1 minus cos theta by 2. Right? Now surface area is equal to 2 pi r into h. Substitute the value of h from here. So this will become 2 pi r square r minus cos theta. Right? सो h की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी. यहाँ पे r नहीं होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होगा. r एक्चुअली बाहर आ गया, r स्क्वायर हो गया है. सो 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2. सो नाउ द सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया. 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर. आर स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, सो आर स्क्वायर इज कैंसल्ड. सो सॉलिड एंगल इज गिवन एज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2. सो हियर you get a relation between omega and theta, right? You get a relation between omega and theta from equation 6.3. तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशन पता है. आइदर ऑफ द वन इफ यू नो, दोनों में से कोई भी एक अगर पता है तो तुम दूसरा एंगल निकाल सकते हो. अगर प्लेन एंगल पता है तो सॉलिड एंगल निकाल सकते हो, और या सॉलिड एंगल पता है तो प्लेन एंगल निकाल सकते हो. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल. Now coming to luminous intensity, another very important part of illumination. Luminous intensity in a given direction is defined as the luminous flux emitted by the source per unit solid angle. ठीक है, इसके पहले हमने luminous के बारे में पढ़ा था. प्लेन एंगल के पहले we have discussed about luminous flux. Luminous flux was what? It was the amount of light waves which is radiating per second out of a luminous body. Now this is luminous intensity. वो luminous flux था, amount of light waves radiated per second out of a luminous body. Now what is luminous intensity? Luminous intensity in a given direction is defined as luminous flux emitted by the source per unit solid angle. Luminous flux emitted by the source per unit solid angle is defined as luminous intensity. यानी कि luminous intensity निकालने के लिए first of all you need to know what is luminous flux, और luminous flux पता होगा तो हम उसको solid angle से divide करके luminous intensity निकाल सकते हैं. ठीक है. It is denoted by the symbol I and usually measured in candela is the unit of luminous intensity. Right? This graph shows the relationship between solid angle and plane angle as it is dependent upon cos of the plane angle. So the graph shows like this. So you can see that this is in degrees and this is in steradian. Right? This is in degrees and this is in steradian. So luminous flux emitted from the source is given by luminous intensity. So this is a solid angle, right? This is a solid angle. So amount of luminous flux emitted through
per unit of solid angle is given as luminous intensity. So let F be the luminous flux crossing a spherical segment of solid angle omega, then luminous intensity I can be given as phi divided by omega lumen per steradian or candela. Okay, lumen, it is a unit of luminous flux. It is defined as the luminous flux emitted by the source of 1 candle power per unit solid angle in all directions. ठीक है. Now what is candle power? First of all, the candle power of a source is defined as the total luminous flux lines emitted by that source in a 1 unit of solid angle. ठीक है, तो lumen divided by omega will give you candle power, and अगर कैंडल पावर से तुमको ल्यूमेन निकालना है, सो जस्ट यू हैव टू डिवाइड मल्टीप्लाई कैंडल पावर विद द सॉलिड एंगल एंड यू विल गेट द ल्यूमेन. सो वही यहाँ पर किया हुआ है, ऐसी ल्यूमेन इज इक्वल टू कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल. एंड कैंडल पावर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स emitted by that source in 1 unit of solid angle. एक यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल में जितने नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स पास होंगे, दैट इज गिवन एज candle power. And if you know the candle power, you can multiply it with the solid angle to get the lumen of the body which is emitting light. ठीक है, और lumen is nothing but luminous flux. ठीक है, lumen is nothing but a unit of luminous flux. अगर तुमको lumen पता है तो you know the luminous flux. अगर luminous flux पता है तो luminous intensity निकाल सकते हैं. Now finally, what is illumination? Illumination is defined as the luminous flux received by the surface area per unit surface area. Luminous flux received by per unit surface area. So E is equal to illumination. E is given as luminous flux divided by per unit surface area. Luminous flux can be given as candle power into solid angle divided by per unit area. So this is given in the unit of lux. इस यही actually illumination या lux के form में whenever you are buying certain equipment which can emit light, तो उसको lux के form में उसका जो rating होता है वो दिया रहता है. So what is lux? Lux is nothing but illumination, and illumination is nothing but total flux, luminous flux divided by per unit area, and this luminous flux can be calculated with the help of candle power and solid angle. Okay, now lux or meter candle क्या होता है? It is defined as the illumination of the inside of a sphere of radius 1 meter and the source of 1 candle power is fitted at the center of sphere. Basically, if you have all the units as 1, so you whatever the candle power you will get is equal to meter candle. ठीक है, meter candle and foot candle is nothing but it is unit of illumination and is defined as the illumination of the inside of the sphere of radius 1 foot and source of 1 cp is fitted at the center of it. So 1 lux is equal to 1 foot candle is equal to 1 lumen per feet square. So if you are taking the area in feet square, it is called as 1 foot candle. ठीक है, now if you convert this foot into meter, 1 foot candle will be equal to 1 lumen divided by 1 by 3.28. it is converted into meter. so ये हो गया हमारा मीटर कैंडल. तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम एरिया जो है वो किस टर्म्स में ले रहे हैं, you can differentiate the illumination in meter candle और foot candle. ठीक है, तो अगर फुट में ले रहा है तो फुट में अगर एरिया ले रहा है तो फुट कैंडल, मीटर में अगर एरिया ले रहे हैं तो मीटर कैंडल. So 1 foot candle is equal to 10.76 lux which is in meter. Lux is nothing but illumination का unit है lux,
एंड इल्यूमिनेशन क्या है? इल्यूमिनेशन इज ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया. ठीक है. सो दिस इज अबाउट. ओके, सो few more terms are left, जो कि हम लोग के कोर्स में है, which is MHCP, MSSP, MHSCP. So we will discuss that also. So brightness of any surface is defined as the luminous intensity per unit area. ठीक है, कितना ब्राइट है, इट डिपेंड्स अपॉन द ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द प्रोजेक्टेड सरफेस इन द गिवन डायरेक्शन. सी, हम हमेशा ये कोन के डायरेक्शन में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो हमारी आई जो है वो प्रोजेक्ट करती है लाइट को एट अ सर्टेन पॉइंट, जहाँ पर हमको दिखता है कि ये वाइट लाइट है, रेड लाइट है, या किस तरीके का कलर है. सो बिकॉज आर आई इज वर्क अंडर द प्रोजेक्शन एरिया, इसीलिए हम हर चीज़ जो भी अभी तक इल्यूमिनेशन में पढ़ रहे हैं वो प्रोजेक्शन के टर्म्स में पढ़ रहे हैं. बिकॉज इट मेक्स एन एंगल विद एन आई, और जहाँ पर हम लोगों को एक इमेज बनती है दैट इज अंडर अ सर्टेन प्रोजेक्शन एरिया. ठीक है. So that is why we are considering this solid angle and plane angle for all the terms of in illumination. Brightness of any surface is defined as the luminous intensity per unit surface area of the projected surface in the given direction. It is usually denoted by the symbol L. If the luminous intensity of the source be I, and I candela, and area is A, the projected area is A cos theta. ठीक है, projected area is A cos theta, so brightness L can be given as I divided by A cos theta, or candela per meter square, or lux per meter square, you can also write it, right? So relationship between I, E and L. I, E and L क्या है? I is nothing but luminous intensity, E is nothing but illumination, and L is nothing but brightness. I क्या है हमारा? luminous intensity है, E है हमारा illumination, और L है हमारा brightness. So relationship between all these three types of terms in case of illumination. Let us consider a uniform diffuse sphere with radius r meters at the center of a source of 1 cp, 1 candle power, and luminous intensity I candela. Okay, so luminous intensity is I candela, radius of the sphere is given as r meters, and candle power is given as 1 candle power. So brightness will be equal to I divided by pi r square, the area of the sphere. So surface area of the sphere will give you pi r square, so I divided by pi r square. Illumination E is given by phi divided by A. Phi is equal to candle power into solid angle divided by A. A is again pi r square. So this will give you, ये कैंडल पावर जो है वो हम लोग स्टेरेडियन में निकाले थे, विच वॉज इक्वल टू 4 पाई. सो यू विल सब्सटीट्यूट 4 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई विल बी कैंसल एंड विल बी इक्वल टू 1 बाई आई बाई आर स्क्वायर, राइट. उसी तरीके से E विल बी इक्वल टू 1 आई बाई आई स्क्वायर. दोनों में ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट I डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू L. सो E will be equal to pi into L. So this is how you can derive a relation between E, I and L. E is equal to pi into L, or E is equal to I divided by I square, R square. ठीक है. So this is the relation between illumination, luminous intensity and brightness of a body which is emitting lights. ठीक है. Now these three terms are important and mentioned in your course also to be studied, which is
mean horizontal candle power, mean spherical candle power, and mean hemispherical candle power. What is MHCP? MHCP is defined as the mean of candle power of source in all directions in horizontal plane. ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर हम जितना भी कैंडल पावर ले रहे हैं उन सब का मीन करेंगे तो यू विल गेट MHCP. In case of spherical direction, in case of spherical direction in all the planes, यानी 3D में अगर हम सारे कैंडल पावर का सम ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं उसका, तो you will get MSCP, which is mean spherical candle power. And if the mean of candle power of a source in all directions above or below the horizontal plane is taken as, तब उस केस में हम लोग जो मीन करेंगे कैंडल पावर का, यानी कि इन द अपवर्ड डायरेक्शन वेरेज इन द लोअर डायरेक्शन जितने भी हमारे लाइंस होंगे उनका कैंडल पावर निकाला जाएगा, इल्यूमिनेशन लाइंस होंगे, एमिटेड लाइंस होंगे, उनका कैंडल पावर निकाला जाएगा और उनका मीन किया जाएगा, तो यू विल गेट मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर. ठीक है, लेट अस सी फ्यू न्यूमेरिकल्स जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. देर आर फ्यू मोर टर्म्स. ठीक है, ये इसको मैं अभी कुछ देर के लिए छोड़ती हूँ, कुछ टर्म्स और भी हैं. लेट अस सी, एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा. रिडक्शन फैक्टर है, लैम्प एफिशिएंसी है, स्पेस टू हाइट रेशियो है. सो दिस आर नथिंग बट फैक्टर्स विच यू हैव टू लर्न अबाउट, मतलब याद रखना होगा कि किस फैक्टर को क्या बोलते हैं. तो लैम्प एफिशिएंसी इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय पावर इनपुट. जो पावर दोगे लैम्प में टू दैट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स विल गिव यू लैम्प एफिशिएंसी. रिडक्शन फैक्टर इज MSCP डिवाइडेड बाय MHCP. तो these are some factors which you have to learn, याद रखना होगा before doing the numerical. Utilization factor is equal to total lumens reaching the work plane divided by total lumens emitting from the source. So जहाँ पर light actually, suppose if you have installed a light for your study table, or you have installed a light in your drawer, तो basically तुमको light जहाँ तुम लगा रहे हो, जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पस के लिए लाइट लगा रहे हो, वहाँ तक लाइट, उस प्लेन पे लाइट पहुँचनी चाहिए. राइट, कई बार ऐसा देखा होगा तुम लोगों ने कि लाइट जो है वो प्लेन पे नहीं पहुँचता है बल्कि प्लेन पे शैडो रह जाती है. दैट मीन्स कि द डायरेक्शन ऑफ द पोजिशन ऑफ लाइट हैज़ टू बी चेंज फॉर दैट प्लेन टू गेट एनलाइटेड. तो इसीलिए ये ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पे लाइट लगाया गया है और उसका जो प्लेन ऑफ सरफेस है, जहाँ पर वर्किंग प्लेन जिसको बोलते हैं, वहाँ तक लाइट जो है वो पहुँचनी चाहिए. तो यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल ल्यूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमेंस एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स. सो वर्क प्लेन पे कितना, अगर वर्क प्लेन पे 0 ल्यूमेंस पहुंच रहे हैं, सो यूटिलाइजेशन फैक्टर विल बी 0. मतलब अगर तुमको शैडो ही दिख रहा है, तुमको कोई लाइट नहीं दिख रही है जहाँ पे तुमको चाहिए लाइट का प्रेजेंस, सो देन द यूटिलाइजेशन फैक्टर विल बी 0. Similarly, maintenance factor is equal to illumination under normal working condition divided by illumination under everything is clean. मतलब कि जब सारी आसपास की चीज़ें तुमने हटा दी है उस टाइम पे, और एक क्लमजी से जगह पे इल्यूमिनेशन देखोगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा. इसीलिए देखो कई बार देखा जाता है कि खाली रूम में जो इल्यूमिनेशन होती है वो ज़्यादा बेटर होती है if we consider a room filled with a lot of objects, because each object will absorb a part of light. ठीक है, अगर तुम कोई खाली रूम में घुसो और वहाँ पे लाइट स्विच ऑन करो तो देखोगे कि जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू अ रूम विच इज़ फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ स्टफ्स, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट विल एब्जॉर्ब लाइट एंड द टोटल light which is effective to your eyes will become a little less. So that is what maintenance factor is. Depreciation factor is equal to 1 by maintenance factor. So this you already know, reflected ray is equal to incident ray,
दोनों का एंगल जो होगा नॉर्मल प्लेन से वो इक्वल होगा. दिस यू ऑलरेडी नो, सो नथिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो लेट अस सी सम न्यूमेरिकल जिससे तुम लोग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. ठीक है. A 200 volt lamp takes a current of 1.2 ampere. It produces a total flux of 2860 lumens. Flux lines दिया हुआ है, काउंट दिया हुआ है. And calculate the MSCP यानी mean spherical candle power of the lamp and efficiency of the lamp. ठीक है. So flux दिया है, I दिया है, V दिया हुआ है. So MSSP will be equal to total flux divided by 4 pi. So total flux is given as 2860, so MSCP will be equal to 2860 divided by 4 pi will give you the MSCP. Lamp efficiency is equal to total flux output divided by electrical input. So VI cos phi is your input. Phi is not mentioned here, so you are taking as at resistive lamp. So cos phi will be equal to 1. So efficiency will be equal to total flux divided by whatever input you are giving. So it will be given as lumens per power. So this will give you lamp efficiency. ये बहुत सिंपल सा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, but you get these type of questions in your competitive exams as well, जहाँ पर एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है. So a room with an area of 6 into 9 meter is illustrated by 10 80 watt lamps. A room with an area of 6 into 9 meter is illustrated by 10 80 watt lamps. The luminous efficiency of the lamp is 80 lumens per watt and the coefficient of utilization is 0.65. Find the average illumination. ठीक है. First of all you will calculate the area of the room. So area of the room will be equal to 6 into 9 meter, which is equal to 54 meter square. Total wattage for each lamp it is given as 10 watt. So for 10 lamps it will be equal to 800 watts. Total flux emitted by 10 lamp will be equal to 80. देखो 80 lumens each lamp के लिए दिया हुआ है ना efficiency, lamp efficiency is given as 80 lumen per watt. So 800 watt के लिए कितना होगा? 80 into 800 will give you 64,000 lumens. Total lumens पता चल गया. नाउ जब टोटल ल्यूमेंस पता चल जाएगा, तुमको एरिया पता है, तो तुम बाकी सब कुछ निकाल सकते हो. इल्यूमिनेशन विल बी इक्वल टू फ्लक्स विच इज रीचिंग द वर्किंग प्लेन विल बी इक्वल टू. अच्छा, यहाँ पे हमको यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है, राइट. यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है तो फ्लक्स विच इज रीचिंग द वर्किंग प्लेन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एलिमिनेशन निकाल सकते हैं. ठीक है. अगर ये नहीं दिया होता तो हम यूटिलाइजेशन फैक्टर 100% कंसीडर करते. अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर नहीं दिया होता तो वी वुड हैव कंसीडर्ड 64,000 एज 5. पर अगर क्योंकि यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है तो टोटल वर्किंग फ्लक्स जो होगा विल बी इक्वल टू 0.65 इंटू 64,000 will be equal to 41,600 divided by the area of the room, which is equal to 54, and this will be the total illumination of the room. ठीक है. So this much of the lux will be present in the room when 8 lamps of 80 watt are used in a 6 into 9 meter of a room. ठीक है. So now you can happily calculate lux in any room. मतलब तुम अपने रूम का भी lux calculate कर सकते हो. You know the wattage of the bulbs which you are using in your room. You know the size of your room. So considering the utilization factor, see 100% तो नहीं होता है किसी भी रूम में. So considering the utilization factor as 0.7 or 0.8, you can calculate the lux of your own room, lux of the rooms in your college or in hospitals, wherever you visit. You can measure the lux keeping this in mind, right? So yeah, next question is, illumination intensity of a lamp is 600 cp, 600 candle power. Find the flux given out. Also find the flux in the hemisphere containing the source of light and 0
above the horizontal. ठीक है. So this is basically a question of MHCP. So considering the zero above the line, यानी कि ये जो MHCP और MHSCP होगा वो सेम होगा इस केस में. So flux emitted by the source will be equal to intensity into the solid angle. Flux is equal to Cp into solid angle. So you have Cp 600 Cp, and the solid angle will be equal to, considering the solid angle as 2 pi, so it will give you itna lumens. And the flux emitted in lower hemisphere will be equal to the flux emitted in the higher above hemisphere, because zero above the horizontal is given. ठीक है. So basically you are considering here MHCP is equal to MHSCP. That is why the flux emitted by the source is taken as flux emitted by the lower hemisphere. ठीक है. So similarly, see in this question number 6.4, area is being calculated. अलग से एरिया कैलकुलेट किया गया है. डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. सो 4 पाई आर स्क्वायर से एरिया कैलकुलेट किया गया है. ब्राइटनेस दिया हुआ है ऑलरेडी 250 मिली ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, राइट. सो ब्राइटनेस इनटू एरिया करके फ्लक्स निकाला गया है ल्यूमेंस में. Then flux absorbed by the globe is calculated by flux emitted minus flux emitted by the globe, or then the percentage light absorbed by the globe is calculated using this. ठीक है. So go through this. This notes has already been shared with you, so you can go through this and you will सी कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. ल्यूमिनस फ्लक्स निकालना आ गया तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी निकालना आ जाएगा, इल्यूमिनेशन निकालना आ जाएगा. जस्ट यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन दिस. ठीक है. सो इफ़ वी सी योर कोर्स, तो बहुत ज़्यादा कुछ तुम लोग का बचा नहीं हुआ है. एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है. So if you see from your course, only the last topic is left, which is electrolytic process. Other than that, illumination and the details of the illumination is also covered. उसके पहले welding cover हो चुका है, electrical heating हो चुका है, traction और electrical drives भी हो चुका है. So the last topic which is left in your course is electrolytic process. So I will take the mid semester up to illumination. एक दो दिन में जैसे ही टाइम मिलेगा. सो बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर योर मिड सेमेस्टर ऑल्सो एंड चेक योर मिड सेमेस्टर रिजल्ट्स ऑल्सो, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेज कम हो पा रहा है. सो द लास्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, वी विल I'll find some time and I'll cover that also before your examinations are proceeded. So I think 11 या 12 को मैं एक और क्लास ले लूँगी. वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इन दैट. मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पोर्शन ऑफ योर previous lectures, so you can let me know. Otherwise you can prepare for your end semesters. देखो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन से मैंने जो न्यूमेरिकल्स, कुछ पोर्शन के न्यूमेरिकल्स बताए थे, वहाँ से कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है. जैसे कि द टॉपिक्स ऑफ द न्यूमेरिकल वेयर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ट्रैक्टिव एफर्ट का हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किया था. तो वहाँ पर ट्रैक्टिव एफर्ट, लोड इक्विलाइजेशन पे कुछ न्यूमेरिकल देखा था. लोड इक्विलाइजेशन, ट्रैक्टिव एफर्ट एंड इल्यूमिनेशन, ये तीन पोर्शन जो है तुम लोगों का, यहाँ से न्यूमेरिकल आने की संभावना है. बाकी तो पूरा थियोरेटिकली है, सो यू हैव टू स्टडी द थ्योरी पार्ट एंड प्रिपेयर फॉर इट. तो लेट मी नो अगर कहीं पे तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इट. बाकी मैं तुम लोग का ये जो क्लासेस है इसका वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ तुम्हारे गूगल क्लासरूम में. सो यू कैन गो थ्रू द वीडियोज़. अगर कुछ और डाउट होगा तो वी कैन कंसीडर इट. तो तुम लोग का 20 या 21 से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है. बिफोर दैट वी विल कंप्लीट द लास्ट मॉड्यूल ऑल्सो, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस. ठीक है.
So till illumination your course is complete. The last chapter we will discuss it within this week. Okay, on Friday we will have your second mid semester. Please do inform to all the other students also. The timings will be shared within 1 or 2 days. Okay. Okay, thank you everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank We'll you, ma'am. see you in the next class. Thank you.